Assalamu alaikum. I, Shahzeb Alam, shall be your host for this very special episode of Corona Se Agahi. As you all may be aware, that the numbers regarding coronavirus in Pakistan aren't telling a good story. So we have a lot to talk about these statistics with Amar Sham in Aaj Ka Data. But today's episode is particularly special because we'll be introducing you all to our student and faculty team behind the development of a very informative and user-friendly dashboard for COVID-19. With that, let's get to our first segment, Aaj Ka Data. Assalamu alaikum, Amar. Walaikum assalam, Shahzeb. Amar, we reported in the previous episodes that globally we were reaching towards some sort of plateau and we were seeing some consistency in the daily number of cases being reported. How has that situation developed now? So Shahzeb, I have Johns Hopkins dashboard in front of me right now. ये latest update हुआ था सुबह 8:30 बजे 9th of June को. Right now we have 7.1 million confirmed cases and 406,000, a little over 406,000 confirmed deaths because of the coronavirus. बज़ाहिर ये लगता है कि जो डेली नंबर ऑफ केसेस हैं वो तकरीबन सेम है because it has a very linear shape, right? But if you look more closely at the daily number of cases, you'll see जहाँ पहले एवरेज नंबर ऑफ केसेस 85 to 100,000 केसेस डेली आ रहे थे सामने, अब वो बढ़कर 128 to 130,000 cases डेली सामने आ रहे हैं, राइट? द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज जो एपिसेंटर है कोरोना वायरस का वो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए से शिफ्ट होकर अब साउथ अमेरिका, रशिया और साउथ एशिया जैसे ममालिक में अब है. और एज़ वी नो दीज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़. सो वहाँ पर जिस तरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबली भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. Right, Amar, you mentioned this shift of epicenters, and we're receiving evidence of the South Asian epicenter as well because of the rising number of cases in Pakistan. And the government gave us a ball figure in the start that something around 25,000 active cases is within their capacity to handle. But now we've crossed 70,000 cases, Amar, and active cases. And how is this affecting the health infrastructure? Right. So the number of cases growing in Pakistan is, as you can see from the curve, is exponential, right? Over the past 3 days, in fact, over the past whole week, what we've seen is every new day the number of cases is higher than the previous day. और कल के केस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो है वो 100 से ज़्यादा अमवात हुई थी पाकिस्तान में, जो एक रिकॉर्ड है. आपने जो कैपेसिटी की बात की, आई कंप्लीटली एग्री. हमारे पास 71,000 एक्टिव केसेस हैं, 1,08,000 कंफर्म केसेस हो चुके हैं अब तक. और ये हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी है उसकी लिमिट्स जो हैं वो अब टेस्ट होना शुरू हो जाएंगी. जी बिल्कुल अमर. एंड लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मेंशन कि जो पहले मिथ्स पूरी चल रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो डेथ्स हैं वो दैट हैव बीन रिलेटिवली लो, that also will go away with the fact कि अब जाके हम कैपेसिटी को रीच कर रहे हैं. We've seen evidence as well how deaths have started rising and will unfortunately continue to do so if things don't change. What would you tell and remind the audience in terms of precautions that they should continue to do? कई सारी मिथ्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कोरोना वायरस के बारे में, बट जो 3 अहम चीज़ें हैं जो अनचैलेंज्ड हैं, इनफैक्ट उन पे अब डबल डाउन किया जा रहा है, वो ये हैं कि मास्क पहनें. मास्क पहनना इंतहाई ज़रूरी है. किसी भी किस्म का मास्क हो आपको वो प्रोटेक्शन देता है. WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस रिवाइज़ कर दी हैं टू एम्फसाइज़ कि मास्क कितने अहम हैं. मास्क के अलावा आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें. अपने और दूसरों के बीच में कम से कम 6 फुट का फासला हो, स्पेशली अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं. और जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है वो हाइजीन का ख्याल रखें. और उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो हाथ धोना है. इफ़ यू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली यू आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बिकॉज आपके हाथों के ज़रिए जो है वो आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर होता है, राइट. और अनफॉर्चुनेटली अगर हमने ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की तो वी कुड सी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन एट आवर हैंड्स.
Amir, thank you very much for sharing all of this and your insights with us. You're welcome, Shazib. Now we'll be moving to our next segment. In this segment, I'm very proud to introduce to you all the team behind the development of Habib University's COVID 2019 dashboard. I have the honor of interviewing 4 members of this team today. Firstly, Dr. Sara Hassan, who is one of the supervisors, then Sara Mahmood working on the back end, Kabir Kumar working with the data collection, and then Anisa Aisha working on the front end. I'll start off with Dr. Sara first of all. Dr. Sara, could you tell us what was the motivation behind mobilizing the entire team into this project, and especially in the midst of the crisis that was happening towards the initial phases of the lockdown? What was the driving force? Driving force was actually a faculty meeting. There was a faculty meeting that happened just as the lockdown, just as the university shut down, and everyone was very worried about what would the future look like. And I thought perhaps we should actually be basing our worries about the future on the data that's coming out rather than just sort of our own apprehensions and fears. And so as a result of that, I got in touch with a few faculty members who introduced me to some of the students who are as part of this team, and we started this dashboard initiative. Right. That's very nice to hear, ma'am. But now that it's been developed, how is this dashboard different from others available, and how does it benefit the end user in Pakistan? So this dashboard, I'm sure that as everyone is aware, there is a government COVID-19 dashboard run by the NIH and the Pakistani government, the federal government. And so this dashboard is a little bit different because we find, as users of the federal government's dashboard, we find that that dashboard contains a lot of information without context. And so it's very difficult unless you're a specialist or someone who is used to looking at certain kinds of data to sort of see what the trend in Pakistan is. And to see what's happening across time. And what we wanted was to build a more user-friendly version of this dashboard, of this information, and to provide users the context so that they can understand what's happening in the country. Right. I think now I would want to move to the student members of your team, and I'll start off with the front end. Anisa, could you please tell us about what were the major challenges faced in the development of the front end which is basically जिससे हम end user interact करते हैं for the dashboard, and इसके ऐसी क्या feature है जो इसको so user friendly बनाती है? Thank you, Shazib, for having us on board, and thank you for the question. I'll start off with the fact that when we received the data for COVID-19 and we found out that we found out different cases for provinces, cities, etc. Then the greatest challenge that we as a front-end team faced was that how to represent all of this data in a user-friendly form so that आम लोगों को आराम से समझ में आ सके कि पाकिस्तान में किस तरह का स्प्रेड हो रहा है, कितना ज़्यादा फैल चुका है वायरस और कितना फैल सकता है, जो हमारा प्रेडिक्शन फीचर है। इसके लिए फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की सबसे पहले सोचा कि ग्राफ से हम एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो सबसे अहम फीचर है वो ये, आप जब डैशबोर्ड खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ट्यूटोरियल का ऑप्शन मिलता है। वो ट्यूटोरियल एक गाइडलाइन होती है कि आप अपने डैशबोर्ड को किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से कहाँ रिप्रेजेंट हुई है। उसके अलावा हमने हमारे पास जब प्रोविंस का डेटा आया तो हमने प्रोविंस के डेटा को इस तरह अरेंज किया कि हमारे पास एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है हमारे डैशबोर्ड पे। आप वर्ल्ड मैप पे किसी भी प्रोविंस पे क्लिक करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड आपका उस प्रोविंस स्पेसिफिक डेटा से अपडेट हो जाता है। Right, Anisa, ये आपने जो बात की कि how we getting specific information from the dashboard, I think जो most helpful चीज़ है is the tutorial part जो आपके डैशबोर्ड में है कि जो भी नया यूज़र आए उसको गाइड किया जा सकता है कि वो तमाम कौन सी फीचर्स हैं जो इस डैशबोर्ड से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अनीसा। नाउ आई मूव टू द बैक एंड विद Sara, because you also had your academics going on and then there was these added challenges of working with the team of the back end of the dashboard. How was all this happening? What were the challenges and how were you able to cope with them? Shazib, yes, the initial challenges that the backend team was facing was how to basically format the data और किस तरह से ज़्यादा efficiently हम data को save करें कि सारे important attributes और features memory efficiently हम save कर सकें। Also जो हमारी data updating process है वो इस वक्त manual है और हमारा biggest challenge ये था कि we wanted a dynamic live website।
तो उसके लिए हम लोगों ने हमारी टीम एक वेब स्क्रैपर बनाने के लिए काम कर रही थी कि जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम अपने वर्जन 2.0 में उसको इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं जो कि विद इन अ वीक रिलीज हो जाएगा। राइट आपने ये अच्छा बताया कि जो डैशबोर्ड 2.0 की भी डेवलपमेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी यू गाइस ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड उसके क्या प्लान्स हैं फ्रॉम द बैक एंड साइड ऑफ थिंग्स एंड बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग ऑफ डेटा एंड स्टोरेज का आई थिंक ये डेटा इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज हम उसी चीज़ को तो विजुलाइज करा रहे हैं and therefore I would now move to Kabir who is working with the data collection team and Kabir could you tell us कि ये जो data आपको मिल रहा है ये कहाँ से आ रहा है are you processing vetting it in any way and हम उस data को लेके अपने dashboard के ऊपर साथ कैसे connect कर रहे हैं। डेटा जो हमारा आ रहा है जो सारी चीज को रन कर रहा है बेसिकली सारी चीज की मोटिवेशन है वो हम प्राइमरीली अभी तो ले रहे हैं जो गवर्नमेंट का डैशबोर्ड है कोविड डैशबोर्ड वहाँ से हम एक डेटा प्रिकॉर कर रहे हैं और उसके अलावा हम जो डिफरेंट ट्विटर प्रोफाइल्स हैं डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स की ऑफ प्रोविंसेस और हेल्थ डिपार्टमेंट उनके जो मिनिस्टर हैं प्रोविंसेस के हेल्थ मिनिस्टर्स उनके ट्विटर आईडीज पे वो डेटा शेयर करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द जनरल पब्लिक वहाँ से हम अपना डेटा प्रिक्योर कर रहे हैं। हमारी जो सारी डेटा कलेक्शन टीम है उनकी सारी मोटिवेशन एक तो डेटा प्रिक्योर करना है और वो दूसरी चीज़ है रिलायबल डेटा लेना बिकॉज हम जब वो डेटा देख रहे होते हैं और डेटा को अपने पास दर्ज कर रहे होते हैं तो हम एक कुछ खास डिस्क्रिपेंसीज नोट करते हैं जैसे डैशबोर्ड की अपनी डेटा में कुछ कैलकुलेशन की डिस्क्रिपेंसी होगी एक दिन एक सर्टेन डेट की डेटा के नंबर ऑफ केसेस और दूसरे डेट के नंबर ऑफ केसेस के बीच में जो फर्क होगा वो टोटल नंबर ऑफ डेली केसेस उससे मैच नहीं कर रहा होगा। Right. It's very important that you mentioned how you move from one source to the other क्योंकि data के आने की to ensure the flow of data to still continue coming in and going to the dashboard. And I would like to also quickly ask you about the plans for Dashboard 2.0 that you believe is that your team is developing. So Dashboard 2.0 is going to have two main features. The first feature is we're having a fact-checking feature. The goal of the fact-checking feature is there's a lot of misinformation about COVID-19 on the internet, on WhatsApp groups, etc. And so the goal is that we will monitor in Facebook and WhatsApp groups and other internet groups for the most commonly shared pieces of information, which will then be fact-checked against peer-reviewed sources to make sure that what's being shared is true or not. And then on our dashboard, we will have a fact or fiction section, and it'll tell you what that information that's being shared on the internet is and whether it's true or not, which is vetted by our fact-checking team. In addition to that, we're extending, because our predictions are very accurate, we're extending them to about a 3-week period now from a 2-week period. And so moving forward within a week, when our version 2.0 comes out, we'll be predicting for 3 weeks. Dr. Sara, thank you very much for you and your team's efforts in the development of this dashboard, which is for the service of the public at large. I think it's extremely important to mention the other members of your team as well who put in the efforts for this dashboard. Along with Dr. Sara, the supervisor was Dr. Abdul Samad. In the front-end team with Anisa, we had Avas bin Asad and Maheen Anis. For the back end with Sara, we had Atif Mahmood and Saman Ghaziani. For data collection with Kabir, we had Maheen Ahmed, Mehdi Raza, Hassan Faz, Amna Shoaib, Binish Fatma, and finally in the fact-checking team, we had Samra Hasnan and Shazwin Ali. With that, I think it's important to reiterate for all our viewers that, like evidence that you got from Dr. Sara in terms of how the predicted models were matching the rising trends which are happening now, it is very important to reiterate for all the viewers that the danger of COVID-19 for your and your family's health now is greater than ever before. However, on the contrary, there is a lack of seriousness that has been growing from where it was before to now. And I think I need to reiterate the precautions that need to be followed for everyone, and we'll close this episode of Corona Se Aagahi on that. That is, again, to keep wearing your masks, keep social distance, and stay indoors as much as possible. Keep washing your hands and keep your areas around you sanitized. With that, thank you very much. Take care and Allah Hafiz.